भाई मुझे माफ कर दो। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। Right. Hey everyone, welcome back to the 28th episode of the channel. मैं भाई ये सिग्मा एंड आज हम लेके आए हैं स्टोरी टाइम 3. You know why? स्टोरी टाइम 3 and 4 जो मैंने प्लान किया था वो हुआ नहीं जैसे प्लान किया था, तो वो थोड़े दिन बाद आएगा. बट दिस इज अ स्पेशल presentation. I don't know. It I have no clue. the story time of colleges. अच्छा हाँ, okay. Okay, let's just put it out there. I'm in VIT, which is top 10 colleges में एक पूरे NIRF के हिसाब से. He is in SRM, which is again top 10 colleges में एक. हाँ, rankings बदलती रहती है. I don't give a fuck. When we joined, we both were in the top 10. Okay, fine. We'll do one thing, ठीक है? इसमें दोनों वो बात करेंगे. Okay. Cause like देख, दोनों के फ्रेंड ग्रुप्स टूट चुके हैं. First year वालों, this is the life lesson you get. Your first year friend groups aren't going to stay long enough. You guys are going to break up eventually by second sem or by third sem, पता नहीं. But go on. Okay, first half of this video will be my first friend group breaking. Second half of the thing will be his friend group breaking. ठीक है? No name dropping by the way. हाँ. Please, हमें college जाते हैं. Okay, so basically the college started, ठीक है? I am a day scholar. Same. ठीक है? दोनों के घर बगल बगल में ही almost. Exactly, like yeah. Not very far off from 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिफरेंस है हम दोनों के घर में. दोनों डे स्कॉलर ही हैं, ठीक है? Even from the colleges, it's not that big of a difference. हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ, माई कॉलेज इज 30 किलोमीटर्स अवे. तो आइदर स्टेइंग बैक इन द कॉलेज वाज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी बिकॉज बहुत लेट हो जाता था घर, ठीक है? तो बेसिकली भंचोद यार जाता था वापस आ जाता था, ठीक है? एंड उसके बीच में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, ठीक है? तो व्हाट हैपेंड वाज आई वेंट टू द कॉलेज, आई केम बैक, कोई दोस्त उसमें बन नहीं रहे थे. क्लास इट वाज वेरी वेरी न्यू, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माय क्लास वाज 90% ऑफ माय क्लासमेट्स वर ऑल तेलुगु एंड आई एम फ्रॉम आंध्र, ठीक है? तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, बट स्टिल भी स्टार्टिंग में तो उन्हें दोस्त नहीं बन रहे थे. देयर वाज ओनली अ फ्यू स्कूल फ्रेंड्स हियर एंड देयर हु वर काइंड ऑफ हेल्पिंग मी आउट. बट एक तो डिसाइड किया था मैंने कि भैंचोद कुछ भी करना है, ठीक है? इतना बिजी होना है, इतने सारे लोगों को जानना है कॉलेज में कि ऐसा कोई टाइम रहे ही ना कि मैं फ्री रहूं मैं, ठीक है? तो 1 week later the days came कि भैंचोद आई एम नॉट फ्री, ठीक है? आई एम कैंसलिंग आउट पीपल. बोल रहा हूँ कि भाई मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं लोगों से मिल रहा हूँ. मैं आई हैव स्टार्टेड सोशलाइजिंग अ लॉट, ठीक है? एंड मेरे क्लास में भी बहुत दोस्त बने, ठीक है? मेनी फ्रेंड्स इन माई क्लास. फिर यू नो दैट स्टार्टिंग में एक अल्टीमेट सा ग्रुप बनता है जब तो कि यही है पूरा कॉलेज लाइफ सेट हो गया, ठीक है? ऐसा मेरा थोड़ा सा ग्रुप बना था, ठीक है? like 10-14 people, 10 to 14. That is yeah, that's a lot. When he called me during this group making thing, I was like, 14 लोगों के साथ तो क्या क्या कर सकते. कसम से it was around like 10 people to 14 people. मुझे I don't really remember. Really like a village. Yeah. उधर अपना फ्रेंड ग्रुप बना एंड दैट वाज दैट वन डे, ठीक है? हम लोग बर्गर किंग गए, ठीक है? इट्स नियर आवर कॉलेज, ठीक है? स्कूटी रेंट लेके बर्गर किंग गया. तो स्टोरी डाली, मतलब 10 लोग 14 लोग स्कूटी पे, ठीक है? तुम जा रहे हो ऐसे स्टोरी डालोगे तो यू विल गेट सम डीएम सेइंग कि भाई यार हमें भी लोड करो. में बहुत होता है या कंफ्यूजन वाला. या एंड ट्रस्ट मी, जब स्टार्टिंग में लोग जा रहे थे आई वॉज वन ऑफ द डीएम्स टू मेनी पीपल क्योंकि मैं डे स्कॉलर था एंड मिंगल होने के लिए मुझे हॉस्टलर से मिलना ही था. और जब हम लोग ये लोग बाहर गए एंड आई गॉट 2 to 3 to 4 डीएम्स ऐसे, भंचोद मुझे अच्छा लग रहा था. मुझे लगा भंचोद यही ग्रुप से रहेंगे, बट स्टिल, ठीक है? आई हैड माई सीरियस रिलेशनशिप गोइंग ऑन दैट टाइम, तो मैं उनसे भी उतना मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया. और वो भंचोद बिफोर आई कुड इवन कनेक्ट वो ग्रुप भी उजड़ गया. तो बेसिकली क्या हुआ, ठीक है? वी एट नाइसली, फोटो वोटो लिए, ठीक है? स्टोरी वोरी डाले, उसका ग्रुप भी बन गया, ठीक है? आई गेस groups really don't work. Yeah. Anytime you have like 10 to 15 people in a group, it doesn't work. या एंड उसका क्या, There will be like subgroups spawned in the group. आई थिंक द नेम ऑफ द ग्रुप वाज बर्गर किंग ऑफ 14, ठीक है? कुछ तो था ऐसा, ठीक है? Burger King के चौधरी. एट द लास्ट टाइम
At the last time there was any message in that group was probably last year. ठीक है, I don't remember. वो भी That was like semester 1. yeah, last year. हाँ हाँ. Yeah. And that time क्या, वो भी last message मेरे दोस्त ने डाला था, ये पढ़ लो भाई एग्जाम के लिए. उसके बाद I think half of the people left the group also. I think Insta पे होगा या WhatsApp पे? WhatsApp. Oh God, okay. ठीक है. Reach. एंड उसके बीच में यू नो द मेन पॉइंट ना, वो तो बेसिकली उनमें से टॉक्सिक, ऑब्वियसली टॉक्सिक लोग रहते हैं, उनमें से 2-3-4 लोग तो टॉक्सिक थे. लड़कों के साइड में से तो कोई नहीं था, सब लड़की के साइड में से थे. मेरी एक दोस्त है मेरी क्लास वाली, वो बस अच्छी निकली. ठीक है, उनके दोस्त तो उतने सेट नहीं हुआ हमारे साथ, और मेरे दोस्त के साथ तो बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ. ठीक है, तो उनके बीच में लफड़ा होने लगा. भाई मैं हैदराबाद गया था, ठीक है, हैदराबाद जाता हूँ, मेरे को अपने मेरे दोस्त से कॉल आता है कि भाई ये कोई तो ये लोग ना इधर ब्लेमिंग ऑल ऑफ अस सेइंग हमने उन्हें फैट शेम किया, उनके गंदे गंदे फोटोज फोटोशॉप किया. अरे जो तो चूतिया है क्या, हमने ये सब कब किया. ठीक है, दे लिटरली ब्लेम्ड. आई डोंट नो अबाउट मी, मैं उतना फंसता नहीं था क्योंकि देख मैं अपने रिलेशनशिप में था. ठीक है, तो वो डे स्कॉलर. ठीक है, एंड प्लस उसी टाइम पे मैं हैदराबाद भी जा रहा था, तो आई वाज आउट ऑफ ऑल दिस ड्रामा. ठीक है, तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया, मैं तो अपने ट्रिप में हूँ, एक्साइटेड फॉर इट. ये लोग सुबह सुबह कॉल करते जब मैं हैदराबाद के मेट्रो में, भाई दे आर ब्लेमिंग अस सेइंग यू नो हमने उनको फैट शेम किया, क्योंकि उन सब में से एक लड़की बहुत मोटी थी. ठीक है ठीक है, उन लोगों ने बोला, दे ब्लेम्ड इट ऑन अस सेइंग हमने उनको फैट शेम किया. ठीक है, एंड यू नो हमने उनके फोटोज तो कुछ तो फोटोशॉप किए, वी कमेंटेड, ये सब चोचले हुए. ठीक है, पता नहीं ये कब क्या हुआ, तो पता नहीं. आई डोंट हैव ए क्लू. ठीक है, तो दैट वाज आवर फर्स्ट फाइट. ठीक है, उसके बाद यू नो ऑब्वियसली दरार तो बच्चों यार, एक बार जब क्रैक आ जाते हैं तो यू कितना भी फिक्स कर लो, दे आर इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते हैं. और उस टाइम के बीच में तो क्या हुआ, लाइक यू नो मेरा दोस्त और उस लड़कियों के फ्रेंड ग्रुप में उन दोनों का कुछ तो चल रहा था. ठीक है, और पता नहीं किसका फॉल्ट. अभी तक बेंचो अभी भी क्लास जाता हूँ, बोलो किसी के बारे में अगर इसका टॉपिक आता तो आज तक बातें होती है. ठीक है, मैं और मेरे दोस्त तो सोच रहे हैं इनका तो खत्म ही नहीं होता. ऑलवेज हाफ ऑफ द टाइम अगर वो टॉपिक निकले तो घंटों तक चलता है, और एंड ऑफ द डिस्कशन में किसी को पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम किसका, कौन सही है कौन गलत. ठीक है, आज तक दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, व्हेनेवर अ गर्ल इज इन्वॉल्व्ड यू विल नॉट गेट अ गुड रिजल्ट. मतलब तुझे रिजल्ट आएगा भी नहीं. ठीक है, आधे से ज्यादा टाइम स्पेशली विद समथिंग ड्रामेटिक. तो क्या हुआ ना, यू नो उन दोनों का कुछ चल रहा था. उस लड़की ने बोला कि लाइक यू नो उनके दोस्तों ने उसको ब्रेन वॉश किया टू नॉट गो विथ माय फ्रेंड. ठीक है, लेकिन मेरी जो दोस्त है उस फ्रेंड ग्रुप में, वो आके मुझे बोल रही है कि हमने तो उसको कुछ बोला नहीं, हमने तो उसको बस छोड़ दिया. अब रिसेंटली जब जाके उसको कन्फ्रंट किया तो वो लड़की बोल रही है मैंने तो कभी वो वर्ड यूज ही नहीं किया, ब्रेन वॉश. तो ऐसे करते करते ना हमारा फ्रेंड ग्रुप उजड़ गया. ठीक है, एंड लाइक यू नो उनके बीच में बहुत सारे झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से वो बंदा हमारे साथ उतना मिलता नहीं था, तो वो बंदा भी थोड़ा सा दूर हो गया हमसे. तो बेंचो ऐसे करते करते ना आउट ऑफ दीज 10 to 14 पीपल राइट नाउ जो हमारे ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ओनली 4 पीपल. वाह बस उतने ही है. ठीक है, ओके. हाँ, that is basically how my friend group broke. If you may know or if you may not know, VIT is the type of institution who always places their campuses जो यूजुअली होते हैं जो सिटी से बहुत दूर होते हैं. तो इट्स बेसिकली लाइक हम जंगल में जाते हैं पढ़ने के लिए. ठीक है भाई, इसका कुछ भी नहीं है, मेरे तो कहाँ आउटस्कर्ट्स पे. अरे फिर भी बट लाइक you know how like SRM is a brand which is been established in at least for our purpose in Chennai. SRM has been established before VIT. So SRM वाले जो जगह है his college, it's packed with like a lot of eating places, you know, Oyos,
drug places. You would have heard about SRM Chennai being caught in drug issues and stuff like that. Because ragging के अलावा लोग करते क्या है SRM में? यही तो करते हैं. But anyways, this is not कुछ नहीं करता यार. this is not an SRM rant or something. But you get my point. हमारे कॉलेज में it is in a reserve forest, so there is not a lot of eateries or places to do stuff around for day scholars. And VIT is one place where ज़्यादा से ज़्यादा लोग 60% as per what I know is are from out of Tamil Nadu or they don't know Tamil or they are not day scholars like us. तो मैंने like मेरे अपार्टमेंट में मेरे जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग are from VIT. And so when I talked to one of my friend who's a senior, he told me about him getting backstabbed a lot when he got into college, and his thing was like during COVID. So he understandably he got backstabbed a lot from his VIT friends. And so I just asked about how the college is overall. Because I was entering the college and I didn't have any clue. Like, I hope a lot of you wouldn't have any clue when you're entering into college. Like, form fill कर दिया अब क्या 2 महीने बाद college entrance. तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा and he said he also supports this channel very much. Okay. Like जब when we started he told me you should always have a side hustle and stuff like that. He's a nice guy. Okay, he tells me that तू एक काम कर, तू VIT में जा, तू दोस्त मत बना. Okay. ठीक है, I know it's a shit advice to give to anyone. Okay, it sounds like a shit advice, but trust me, I am way happier right now that I heard his advice than if I didn't hear his advice and I would have been. Okay. So basically he says this thing saying कि तू दोस्त बनाई मत, तू तेरे काम से काम रख. If you're watching from VIT, you would resonate that a lot of people who in my college they do their work on their own are well off compared to the people who have friend groups of like 14 or even 4 or 5 people. Those people are very like secluded कि उनके group में रहते हैं, वही सब attend करते हैं event and all that. First sem, I did nothing, did not study, did not make friends, just went to class. Like he said, day scholar है. Why should I stay in the college campus if there's no class? Came, went back. Came, went back. That's it. That's the only thing I did. And it was more feasible for him to come back because his college थोड़ा नजदीक. हाँ, मतलब इससे his college is farther than mine. Yeah. So basically, I did that for the first year. हाँ, थोड़े connections हुए, because classmates or like people who like are around my class did try to talk with me and they made connections and we made a sort of like a small group. Classmates का group जो होता है normally first year में you guys make a lot of groups. Please don't make those many groups. बाद में trauma तुम्हें होगा. But first year में जो groups बनते हैं infinitely many, उनमें से एक class का group था. And I personally have this tolerance to the people जो like तू अगर class में बैठा and there is this one kid who the entire class hates. I have this kind of a weird habit to go and talk to this person. Okay. And somehow or the other I become friends with them, even if the whole class of like 70 to 80 people think that he's a chutia. Okay. I just have this thing, okay. And I don't really mind. तो मेरे केस में क्या हुआ था, ये बंदा था and he's still my friend, okay, he's very good. So he is this type of a person who doesn't like, I mean, I don't blame you if you are this type, but I can also resonate with him. He's the type of person who doesn't let a lot of information out, what is going on in his life. At the same time, he's not ready to change himself. ठीक है, बहुत सारे लोग you would see in your colleges and your schools also that they don't like a lot of information to be leaked. So this dude had this like face mask kind of thing going on in his life. कि I would pretend that I'm a chutia to everyone so that nobody comes close.
and he had a school friend group a lot more jolly types. So he was like, I don't want this emotional trauma in college. My school friend group is better than my college friend group. So I'm gonna put this mask on myself that I'm a chutia in the whole class. And that's how he had his first sem going on. Okay. Second sem में हम एक साथ थे. And the thing that happened between the first and second sem was I got offended. Okay, sort of. Because we were sat in the lab and he just basically started like uske mask ke periphery ne he used to just like rant out to people Okay. like tu chutiya hai, ye chutiya hai, wo chutiya types. ठीक है. And so उसी दौरान he just used the N-word against me. And I got offended. And offend होके अगले दिन हमारा mechanics का एग्जाम था, which is by far the biggest place you will need your calculator, by the way. I stole this calculator. भाई यार I did get offended, and it was kind of like I didn't know if he was serious or not because the entire class thought of him as a now bad that you stole the calculator. No, I'll tell you what happened. Okay. And then later on, he found out that I had the calculator. He came to a different class I was sat in with my school friend. And he comes on and he causes this whole ruckus. He had an extra calculator which was like from a senior or someone which was old, okay? And he broke that calculator in front of me. Okay. He threw his bag on the floor that I wasn't giving him his calculator back to him. And that's how our friendship basically started. He knows that I had his calculator. I gave it back to him after 5 minutes. मैं उतना चूतिया नहीं हूँ. So I can understand that अगले दिन उसको जरूरत पड़ेगी calculator की. तो मैंने 5-10 मिनट बाद दे दिया उसको. And then this dude and I resonated quite a bit. Okay, he was a Marvel fan like I am. ठीक है. So we started talking through that terms. And slowly we by the time second sem came up, VIT में एक special case. It's called flexible timetables, where every fucking hour, every fucking subject, every fucking teacher you can choose. Now your friend group can be in a fucking different block while you are sat here writing with the worst teacher of your subject and you can't do shit about it. इस system के ना दो types है. You either end up getting a very good amount of friend friends group, or yeah. you end up lonely. Yeah, exactly. तो मेरे केस में क्या हुआ? हमारे केस में we ended up in the same class in 1 or 2, like 3 or 4 classes, which at that point is a majority of classes we are attending with that group compared to without that group. So we found this group called the Ghost Team and 6-7 लोग हम लोगों ने ऐड किए, मतलब 6 नहीं 7 नहीं 6 लोग ऐड किए, and it wasn't as much as like 14 people, but it slowly transpired to become like एक बंदे की एक प्रायोरिटी है, एक बंदा दूसरे ब्रांच से है, एक बंदी की फ्रेंड ग्रुप कुछ अलग ही ब्रांच से है, तो she runs away, one girl is too studious, me and this motherfucker is just, we are just existing, we can't help it. And so that's how our friend group was. It still is intact. Okay, the 6 members we had part initially taken in are still there. It's just not as much enticing as last sem. So that was VIT's first rant. I mean, that's what happened in the first year. I mean, a lot of things happened. The whole episode. अब सब कुछ एक ही वाले में बोल देंगे तो how will it churn out more episodes? Exactly. तो अगला episode में you will get to know. He has a million stories. I have a million stories. सब बताएंगे. I might put a short trailer of the next episode on this episode so that you watch the next episode. But if you like this video, I hope you liked it. Share it with your college friends, share it with your cousins, subscribe to our channel and get us to 150 subscribers by the end of this year. Yeah, by end of this year. भाई यार थोड़ा end of 2-3 महीने कर दो. Peace off. Fuck off. ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रहा है?